Hello friends, I am Ajit Agarwal and this class is for class 12 students of chemistry. Today's the topic is nuclear substitution reaction. This is also very confusing topic for students. So I am presenting you what is nucleophilic substitution reaction. First of all, I will discuss you what is nucleophile. Nucleophile means nucleus loving and it is known that nucleus is positively charged. तो इसका मतलब ये हुआ कि those species which can attract towards positively charged nucleus, that is called nucleophile. Okay, so what is nucleophile? Nucleophiles are the species which are nucleus loving or positive charge loving. मीन्स इस न्यूक्लियोफाइल पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होंगे. न्यूट्रल मीन्स कि उसके साथ लोन पेयर भी होना चाहिए so that can attract towards positively charged center. So nucleophile is a reactant that provide a pair of electrons to form new covalent bond. So these may either negatively charge as I have told you or neutral with lone pair of electron. Some of nucleophiles are OH माइनस. ये नोन है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है एक्सेस क्वांटिटी में होता है इसलिए OH माइनस होगा और एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल काम करता है. सिमिलर CH3S over S there is negative charge. Chloride ion, in case of amines, nitrogen has lone pair of electron. Similarly, acetylide ion, all these are nucleophile because all these carry negative charge. Okay, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, लेकिन न्यूट्रल के साथ साथ उसमें लोन पेयर का होना भी जरूरी है. नाउ कम टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट इज दिस रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं और एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किसी वीकर न्यूक्लियोफाइल जो कि एक ऑलरेडी रिएक्टेंट में होगा उसको डिस्प्लेस कर दे तो उसको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं. Here I am taking alkyl halide, that is CH3Br. This is important topic related to chapter alkyl halide. In CH3Br, CH3 is methyl group and bromide ion is itself a nucleophile, but weaker than OH minus. This OH minus can come from any of the alkali like KOH, NaOH वगैरह. So suppose you are asked that what happens if methyl bromide reacts with potassium hydroxide or caustic potash, then you can see here OH ion is much more stronger nucleophile than bromide ion. So this OH can displace this bromide and instead its place in place of Br, OH ion will place. Okay, तो ये Br को डिस्प्लेस कर देगा और OH इसकी जगह पर आ जाएगा तो बन जाएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल and bromide ion will release. So here substrate is methyl bromide. Substrate are those reactant over which a reaction is carried out. Hydroxide ion is attacking to displace bromide ion, that is weaker nucleophile. The product form is methanol and bromide ion. The leaving group is called nucleophuse. Okay. So this is the definition for nuclear substitution reaction. बट ऑन द बेसिस की रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रोडक्ट सॉरी कितने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा उस बेस पर ये दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं. तो दीज टू टाइप डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन हाउ मेनी रिएक्टेंट विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. उस बेस पर अभी दो टाइप के हमारे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं. दैट इज substitution nucleophilic bimolecular represented as SN2. So that 2 written in subscript represent order. Okay, so here you can even explain it as substitution reaction of order 2. And next is substitution nucleophile unimolecular
a nucleophilic substitution reaction of order 1. What is a substitution nucleophilic bimolecular reaction? In this reaction, the elimination of leaving group and the addition of nucleophile occurs simultaneously. SN2 takes place sorry, where central carbon atom has easy access to nucleophile. मीन्स कि अगर कार्बन आसानी से एक्सपोज्ड हो सकता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी. In SN2 reaction, the rate of reaction is affected by few conditions. They are discussed below. The first condition is that numerical value 2 in SN2 states that there are two concentrations of substances which affect the rate of reaction. As I am telling you about two reactants, अगर rate of reaction दोनों reactant पर dependent होगा, that is nucleophile मॉलिक्यूल, तब तो रेट ऑफ रिएक्शन की ऑर्डर 2 हो जाएगी, यानी कि वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी. और रेट ऑफ हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सबस्ट्रेट, दैट्स एनी ऑफ द हैलाइड एंड दैट ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो हम देख सकते हैं कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो हैव यू अंडरस्टूड? तो अब इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं. मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर हैलाइड. फर्स्ट ऑर्डर हैलाइड तो आपको सब नोन होगा कि अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप में कार्बन की चारों वैलेंसी में एक हमने जोड़ दिया हैलाइड ग्रुप, और इन सभी में कोई सिंगल कार्बन अगर अटैच्ड है तो 1 डिग्री होगा सिंगल अल्काइल ग्रुप को. अगर 2 अल्काइल ग्रुप लगाते हैं सेंट्रल कार्बन के साथ तो ये 2 डिग्री हाइलाइट होता है. अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगेंगे 3 वैलेंसी के साथ तो 3 डिग्री होगा. लेकिन मोर इजी जो SN2 रिएक्शन होती है वो 1 डिग्री में होती है. ऐसा क्यों होता है? इसका रीजनिंग फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर इजली इन प्राइमरी हैलाइड्स. तो रीजन बिहाइंड इज दैट कि अगर यहाँ पर हम एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं OH माइनस, तो ये नोन है कि OH पर नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस इज द रीजन कि ये OH ग्रुप फ्रंट साइड से कार्बन पर अटैक तो नहीं कर पाएगा. इसका रीजन क्या है? व्हाई इट कैन नॉट अटैक फ्रॉम दिस साइड? क्योंकि ये जो क्लोरीन ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वो इस OH को रिपेल करेगा, और यही रीजन है कि ये OH किसी और साइड से यानी कि ऑपोजिट साइड से इस OH पर अटैक कर सकता है. ओके, व्हाई इट कैन अटैक फ्रॉम बिहाइंड? बिकॉज जो हाइड्रोजन एटम है इनका साइज तो छोटा होता है, तो दे विल नॉट शो एनी रिपल्सिव फोर्स ओवर OH आयन, इनकमिंग OH आयन. सो OH आयन कैन इजीली अटैक टू सेंट्रल कार्बन. तो व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म? तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए, और शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए बनता है क्योंकि इंस्टेंटली वो अनस्टेबल होने की वजह से वो ब्रेक हो जाता है आसानी से. ये हमने दिखा दी 3 हाइड्रोजन एट डिफरेंट प्लेसेस. तो हम देख सकते हैं कि OH विल अटैक फ्रॉम राइट साइड. अगर OH आयन इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा तो ऑब्वियस है कि C और Cl के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो रिपल्शन लगेगा ना, बिकॉज OH इज मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोरीन. और अगले ही स्टेप में ये क्लोरीन डिटैच हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को रिमूव कर देगा. So this outgoing nucleophile is called nucleophuse. As I have told you in the last slide, you can note from there. तो हम देख सकते हैं कि OH ग्रुप राइट साइड में अटैच हो जाएगा along with 3 hydrogen attached to carbon. Now the product form is methanol. The IUPAC name is methanol, but common name of this molecule is methyl alcohol. ओके, तो अब यहाँ पर देखने में क्या आता है खास चीज कि जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल जुड़े थे वो ऑपोजिट साइड हो गए हैं. यहाँ पर जो Cl ग्रुप अटैच है ये जुड़ा राइट साइड, लेकिन OH ग्रुप इस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में आ रहा है लेफ्ट साइड. तो दिस फिनोमेना इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन.
This is known as inversion of configuration. इन्वर्जन मीन्स कि इमेज देखे तो उल्टी हो सकती है, दिख रही है नहीं कि पहले न्यूक्लियोफाइल था राइट साइड में, अब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसका मतलब टोटली जो फिगर मिल रही है वो इन्वर्टेड हो रही है। तो हेयर यू कैन सी कि सबसे इजली ये प्राइमरी हैलाइड में रिएक्शन होगी। टर्शियरी हैलाइड में ना होने का रीजन क्या होगा कि टर्शियरी हैलाइड में इन H की जगह पर 3 अल्काइल ग्रुप लगेंगे एंड दीज 3 अल्काइल ग्रुप विल क्रिएट रिपल्सिव इफेक्ट। उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बिगर होगा, वो OH को आने नहीं देगा। तो इसका मतलब है उसमें ये रिएक्शन बहुत कम ही कैटेगरी डिग्री में हो पाएगी। और ये रीजन है कि मोर इजली दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन प्राइमरी हैलाइड मींस 1 degree. 1 degree will show more easier SN2 reaction, after the 2 degree, and lesser in case of 3 degree. Understood? So this is SN2 reaction. Now come to our last topic of this class, that is SN1 reaction. तो जैसे हम देख सकते हैं कि SN2 में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन का अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगी, ओनली सबस्ट्रेट। तो हियर रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप एंड स्लोएस्ट स्टेप इज फर्स्ट स्टेप। So this reaction takes example for this reaction is mostly 3 degree. 3 degree में सबसे आसानी से reaction होती है as I mentioned here, tertiary carbocation is faster. ठीक है, तो हम tertiary को ले रहे हैं like tertiary butyl bromide. In 3 degree butyl bromide, center carbon will have 3 alkyl group attached to it. Center carbon is called 3 degree because 3 alkyl group are directly attached to it, along with one weaker nucleophile, that is bromidine. If you have to show the effect of again another nucleophile OH, then in first step OH will not attack from any other side, because from right side bromidine will repel and from left side 3 alkyl group will show steric hindrance. Okay? Therefore then OH will not attack to center carbon. This is the reason that this reaction takes place in 2 steps. In first step, which is slow step because सबसे ज़्यादा टाइम तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में ही लगेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कि ब्रोमाइड, अगर ब्रोमाइड आयन लीव कर जाएगा यहाँ से Br-, क्योंकि उन्होंने के ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड आसानी से इसे शिफ्ट कर जाएगा। दे आर क्रिएटिंग सेंटर कार्बन पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज along with the alkyl group. This is called tertiary butyl carbonium ion, which is being highly reactive, will react instantly with another nucleophile. Step 2 I am presenting here. Tertiary butyl bromide will give tertiary butyl carbonium ion in first step. This is tertiary butyl carbonium ion. Center carbon is positive charge. Due to this positive charge, OH ion can attack from the same side as there was initial nucleophile, resulting in the formation of CCH3 on 3 side of central carbon and OH group from right side. So can you tell the name of this molecule? Please try. Pause the video and check whether your answer is correct or incorrect. Its common name is tertiary. In short, I'm writing TERT, tertiary butyl alcohol. And its IUPAC name is, you will take the chain of 3 carbon atom, which is the longer chain. It will form
प्रोपेन, 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप होता है बिकॉज ऑल आर सिंगल बॉन्डेड. You will put in without e to all. Because there is vowel sound in all, you will not place e. But CSC left behind, it is at second place. So this is placed as prefix. So 2-methyl propane 12 will form. So here you can see the rate of reaction is determined by slow step, and slow step is first step in which there is breaking of tertiary butyl bromide bond. So rate of reaction will directly proportional to the concentration of CH3 whole 3 CPR concentration along with rate constant K. So here you can see that rate determining step involve only one alkyl halide. तो ये हम कह सकते हैं कि ये SN1 रिएक्शन होगी बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट. तो हियर यू कैन सी कि केवल टर्शियरी ग्रुप में ही ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप होगी, सेकेंडरी में उससे स्लो होगा और प्राइमरी में उससे भी कम. तो प्राइमरी में तो देख लिया था ना कि हम लोगों ने 2 डिग्री रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे इजीली होगा SN1 में 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. सो मिनिमम SN1 रिएक्शन. So this was the topic for today's class. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे उनको भी एडवांटेज मिल सके. और अगली वीडियो को देखना ना भूलें जो कि बोर्ड पर्पस की होगी, आपको मोर एडवांटेजेस होगी.